Yeah. Good morning, everyone. Are you able to hear me and see me clearly? Please type in the chat box. Okay, thank you so much for replying. Okay, so see, by the time more students join in, I'll do one thing. I think this is my second lecture with you all, right? Yes. So, okay, so for those of you who don't know me, so my name is Heer Jalundwala. The subject that I'm taking for you is management, right? This is a very interesting subject, and last lecture we had just started with the basics of management. So, what exactly management is? So, can anyone tell me what is management? I have given you three simple code words to remember what management is. Can you please, someone, if remembers, type it in the chat box? Once you answer, I'll start sharing the presentations for today. Anyone remembers three code words I had given you? Let me start sharing my screen. Are you able to see the screen that I have started sharing with you? Understanding management. आपको दिख रहा है कि नहीं? Please reply. Okay, thank you so much for replying. Yes, so we'll start with today's concept. So, see, first of all, I'm giving you three simple words. I know many of you must be attending first time also. So, the simple meaning is managing men tactfully. Yeah, आपको see, try to understand now since you people are in TY. So, now it is expected कि आप जितना concept समझे, it is better for you, right? Rather than what I mean to say is same बार लिखो रट्टा मार के and all. TY में this doesn't work, right? So just give me a minute. Yeah, I'll just mute you all. Yeah, ताकि disturbance ना रहे. Okay. So see, managing men tactfully. Now let me, everyone please have a look at the slide that I am showing you. It is a process of planning, decision making, organizational, leading, motivation. So see, ये सब जो points है, this is nothing but the functions of management. This is the answer what we are going to do today. See, don't worry, if last lecture we had started with one more answer, I think, so that will continue in the next session, because now I want both of your divisions to be parallel. So वो division में जो हुआ है उतना ही I want कि यहाँ पे भी उतना हो, right? So yeah. So if I ask you, basically ये सब जो functions है ये तो हम study करने ही वाले. See आगे क्या लिखा है? Controlling resources, financial, physical information of an organization to reach its goals efficiently and effectively. Now, I want anyone of you over here can tell me what are a company's goals. कंपनी के गोल्स क्या हो सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स वॉट एवर वी टेल, एनी वन और टू गोल्स. Goals means what company wants to achieve, basically. Good. Someone has said to earn maximum profit. Yes. And one more point. Just one more point I want. Thank you so much for replying. Building goodwill. And ये सब जो होता है normally it happens over a period of time, right? सालों साल का भरोसा. For example, when it comes to management, I always try to give more and more Indian examples. Thank you so much for replying. Yes, I can see all your replies. Take the example of Dhirubhai Ambani, the founder of Reliance Group. Right? I can see he is the best example of a good manager. Why I always tell his example? Because he was someone who started from scratch. Scratch se start karke he built such a big empire. Today, if you see, his now since he is no more, his sons rather, those who are managing the business, not just the richest persons in India, but in the world also they come in top 10, right? What I mean to say is he had that skill, कौन से लोगों से कैसे काम करवाना है, basically, right? And why I always give his example, because it's not like he inherited his father's business something. He knew, like, see, I always keep on telling my students also,
that what you study in books and practical life, there's a lot of difference, right? So इसके लिए I mean not necessary आगे जाके जब real life में problems आते हैं, you ये what we are studying these theories of management meaning and all, तो ये सब आगे जाके कब apply करना आएगा, that textbooks don't teach you. वो आपको कैसे पता चलेगा, maybe through internships, आप जितना ज्यादा practical knowledge लोगे तब, right? So I hope this is clear what exactly is management. So now I'll share with you the next slide, which are the functions of management. This is again a very important answer. Why? Because ये exam में हमेशा पूछा ही जाता है. So let me share the screen with second slide with you all. Till now किसी को अगर कुछ doubt है, you can ask me in the chat box. Okay. Are you able to see the second slide? Please reply yes, no in the chat box. ये जो second slide है, management functions, it's written. Okay. Thank you so much for replying. Yes. Okay, so see, before I forget to tell you people, um, okay, you all know the assignments are to be handwritten, right? So, and what I have decided for all my students is, किसी end of the week, मतलब for example, हमारी week में I haven't seen the timetable, 2, 3 जितने भी lectures होते हैं, उन सब का मिला के असाइनमेंट्स आपके जो है, यू विल सेंड मी ओनली वंस विच इज ऑन संडेज, ताकि मुझे भी कंफ्यूजन ना हो, राइट? एक एक करके मुझे मत भेजो. So you might have, I'll send it in the group again also. I'm typing my email ID over here. And strictly it's a handwritten assignment. My email ID is here. So the question for today's assignment is, what is management? I mean, what do you mean by management, and what are the, see, I'm typing it out, please make a note of it. What do you mean by management? What are the functions of management? Okay. So now I hope the assignment questions are clear. These are the assignment questions for today. So now we'll start. So see, in order to remember this answer, अभी मैं आपको एक code word दे रही हूँ. So everyone make sure कि, and yes, one more thing very important I wanted to tell you. Like see, I can see many people in the chat box. उन्होंने उनका सिर्फ first name लिखा है. सो क्या होता है, जब भी ऑब्जर्वर्स आएंगे अटेंडेंस लेने, हमें नहीं पता चलेगा कि बिहाइंड द स्क्रीन कौन बैठा है, राइट? सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू ऑल join the meeting, make sure your name is your full name, right? Otherwise हमें नहीं पता चलेगा आपका अटेंडेंस कैसे मार्क होगा, right? Okay, so now we'll start with the main answer for the day. Management functions, इसका जो कोड वर्ड है, आई एम टाइपिंग इट इन द चैट बॉक्स. POSDCORB. This throughout the life, throughout your management career, even if it's your current third year or आगे भी, if people want to do MBA, remember this code word. Life is going to be very easy for you, right? Because ये सब जो काम होते हैं मैनेजमेंट के, सब करते ही है बेसिकली, right? So yes, so the first one, P. Now you can have a look at the slides also simultaneously. P stands for planning. See, try to understand, planning is the first and foremost step of any activity. Planning के बिना life में कुछ भी चीज नहीं हो सकती. Let me give you a very simple example first. You have, let's assume currently कि कोरोना वायरस हैज एंडेड, हम थोड़ा फ्यूचर में जा रहे हैं. नाउ सिंस यू आर इन TY, यू ऑल नो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, जरूरी नहीं है सेंटर कॉलेज ही आता है. तो लेट्स अज्यूम अनफॉर्चुनेटली आपको सेंटर कहीं पे दूर आया हुआ है, एंड सो व्हाट आई मीन टू से, आपको प्लानिंग करनी पड़ती है. सो टेल मी वन थिंग, व्हाट वुड बी अ प्लान है. आपको टाइम पे, यू ऑल नो 30 minutes पहले यू हैव टू रीच द सेंटर, राइट? सो व्हाट विल बी योर प्लान ए बेसिकली, यू विल टेक अ लोकल ट्रेन हमारी जो होती है टू रीच द सेंटर, राइट? नाउ लेट्स अज्यूम दैट डे यू कम टू नो कि ट्रेन की तो स्ट्राइक लगी हुई है.
So what will we do? Is there anyone in the class who will say कि मैम मैं एग्जाम ही नहीं दूंगा? No, things don't work that way, right? Because exams miss नहीं हो सकते. So now what would be your plan B? See, ये सब मैं बोल रही हूँ immediately करना पड़ता है. ये तुम्हें कब पता चला? जब तुम स्टेशन पे गए. Already time is ticking and वहाँ पे 30 minutes पहले you'll have to reach. If you don't reach, so they won't allow you, right? So I'm already preparing you guys in advance. Okay. So next, what would be your plan B in such a case? Plan B क्या होगा? I'll anyone what would be plan B? मैंने वो डिवीजन में भी पूछा था. That's why I'm asking here also. What would be your plan B in such a case? Anyone? ट्रेन्स बंद है, स्ट्राइक है, क्या करोगे? एग्जाम नहीं दोगे? आपका क्या सेकेंड ऑप्शन रहेगा? प्लान बी. Please type everyone. I want session to be interactive. Good. Yes, people, thank you for replying. So see, now you know हमारी mentality क्या है? First we are looking at more affordable option. Train सबसे affordable था. Yes, that is not working. Thanks for replying. सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या होगा? बस, टू टेक अ बस. यस. नाउ क्या हो जाता है? बस इज अ वेरी गुड ऑप्शन. आप गूगल में यू हैव स्टार्टेड सर्चिंग द बस नंबर ऑल्सो कि डेस्टिनेशन पे कौन सा जाएगा एंड ऑल. बट नाउ यू कम टू रियलाइज कि बस में यू ऑलरेडी नो इंडिया में रोड ट्रैफिक इट्स अ बिग प्रॉब्लम. सो नाउ व्हाट यू विल थिंक इज अरे इफ आई टेक द बस मुझे एटलीस्ट इट विल टेक, यू कैन सी इट ऑन गूगल रूट्स, it will take 3 to 4 hours to reach. Tell me, is this option feasible? Feasible का meaning है possible. Is it really possible? Doesn't make any sense. 3-4 घंटे बाद पहुंचे, एग्जाम्स तो हो ही जाएंगे, right? And you can't attempt it again. So in such a case, what please everyone don't mark anything on the screen. इस पे mark मत करो please. Okay. So what would be your third option now? Maybe as someone said, take an Ola or auto, right? उससे क्या है? तुम फटाफट पहुंच जाओगे and you will be able to give exams also, right? So इसलिए planning हम I'll tell you most of the time जो managers होते हैं, you won't believe 80 to 90% उनका जो time होता है एक अच्छा plan बनाने में जाता है. See, अभी तो what example I gave you, that was a daily life example, every day's example. तो तुम सोचो बिजनेस में किसके 1000-100 करोड़ लगे हुए हैं, उनको तो कितना दे हैव टू ईच स्टेप जो होता है दे हैव टू फॉलो इट करेक्टली, अदरवाइज इट कैन बड़ा लॉस हो जाएगा. व्हाट आई मीन टू से, राइट? नाउ द सेकेंड O stands for organizing. Okay. Now see, before starting this second function, I would like, we now throughout I'll use an example. Okay, everyone knows what event management companies are. क्या होते हैं event management firms? I am giving you simple examples so that you can relate. Event management firms. Yeah, basically, for example, all those events that are happening, birthday parties, marriages. So, वहाँ पे handle करना, and by handling by mean everything. Maybe stage का जो होता है, anchoring part, decorations part संभालना, catering, right? So, we'll take example of such firms. Okay. So, organizing. Uh, Okay, organizing का meaning क्या है? So for example, I have to set up a team. Okay, I don't know if I have said it over here. Anyone knows the full form of team in this class? Team का एक full form होता है. I'm typing it out in the chat box. Anyone? If you know, you can type it out. Okay. Together, everyone achieves more. Yes, this is the full form of team. So what I mean to say is, see, I'm handling a huge company. It's a event management firm. So obviously, it's not going to be an easy task. I cannot function on my own, right? What I'll have to do is hire people. Logo से after all, management is about managing people only, right? Logo से काम करवाना है. तो organize करना मतलब क्या कि कौन क्या काम करेगा, क्या टाइमिंग्स होंगे एंड ऑल, राइट? तो इन द सेम वे कंपनी
अगर चलानी होती है, गिविंग यू अ सिंपल एग्जांपल, देयर आर मेनी डिविजन्स इन ऑल कंपनीज, यू माइट हैव हर्ड, मार्केटिंग होता है, फिनेंस, एचआर, सो आई मीन इंडिविजुअली कौन क्या हैंडल करेगा डिपेंड्स ऑन द स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, राइट, तो वो सब देखना. The next one is staffing. Okay, now if someone asks me, staffing in simple words means what? Placing the right person for the right job. Placing the right person for the right job. Okay, now let me give you a simple example over here. Uh, let's assume मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ. If someone is there, he or she has done his MBA in finance, and ऐसा पर्सन है, मैं कंपनी की मैनेजर हूँ, आई एम someone has done the MBA in finance and I am putting him or her in marketing department. Do you think I am doing the right thing? Just type yes or no in the chat box. करेक्ट, नो, इट्स अ बिग नो, राइट, बिकॉज उसका जो नॉलेज है, एक्सपर्टाइज है, वो कहीं और है फिनेंस में, मैं उसे डाल रही हूँ मार्केटिंग में, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, उससे तो प्रॉब्लम आने ही वाली है काम में, आई एम क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर माई कंपनी ऑल्सो, राइट. सो इन द सेम वे, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट इवेंट मैनेजमेंट फॉर्म. So वहाँ पे basically what happens is, for example, if someone who's very good at speaking, public speaking बहुत अच्छा है, so in such a case what I'll do is, maybe anchoring stage का जो part है, I'll give it to such person. if I ऐसे जो person है, मैंने उसको catering का काम दे दिया कि चलो तुम dish उठा के दे के आओ, I mean he is not the right person to do that, right. जिसके जो skills है उस हिसाब से काम दिया करो, right. So that was staffing. S, placing the right person for the right job. Now going, see, आज हमें ये कोड वर्ड्स, ये जो पोस्ट कॉर्ब है, उतना ही फिनिश करना है, राइट. यस. द नेक्स्ट वन, डी, विच इज डिरेक्टिंग. ओके, सो इसमें आई वुड लाइक टू आस्क माई स्टूडेंट्स अ क्वेश्चन. Everyone has seen the movie Oh My God. It was starring Akshay Kumar and Paresh Rawal. Oh My God movie. सब लोगों ने देखा है कि नहीं? First of all, tell me that. Yes or no? Everyone type. Kitne, let me see how many participants are there. Almost 27 excluding me. Yeah, 28 excluding me. सब लोगों ने Oh My God देखा है कि नहीं अक्षय? Okay, thank you for replying. Most of you have seen. Okay, so for those of you have not seen, those of you have seen, याद करो. उसमें there is one scene where Paresh Rawal, almost before intermission, परेश रावल इज इन बिग ट्रबल, वो भाग के जा रहा है, तभी दिस कृष्णा, और रादर अक्षय कुमार, हु इज द गॉड इन दिस मूवी, वो उसकी बाइक पे आता है टू हेल्प परेश रावल. सो क्या होता है, ही ड्रॉप्स हिम टू हिज होम बेसिकली. नाउ व्हाट आई मीन टू सेयर इज, तभी उसका एक डायलॉग था, इफ यू रिमेम्बर, व्हाट ही हैड टोल्ड इज कि भगवान का काम क्या होता है, तुम्हें सही राह दिखाना, राह पे चलना तुम्हारा काम है. इफ यू रिमेम्बर दिस, याद आया सबको? दिस वॉज द डायलॉग. एग्जैक्ट वर्ड्स आई डोंट रिमेम्बर, बट दिस वॉज द डायलॉग. यस. So what I mean to say is here, in the same way, who's a good leader, who shows the right direction. See, everyone try to understand. After all, we all are human beings. हमारे से mistakes होने ही वाली है. Yes or no? तो एक अच्छा manager who is a good leader, who shows the right direction कि if this is happening wrong, कि आप ऐसे करो काम, ऐसे किया करो, right. So what I mean to say is, see, उसमें भी क्या कहा था कि we have to see, if हमें employees है, so see again a simple example. If someone road, you are going on the road, someone ask you, मैम मॉल जाने का रोड कौन सा है, स्टेशन जाने का, तुम उन्हें बताते हो यहाँ से लेफ्ट राइट सीधा जो भी है, यू डोंट गो अलोंग विद देम. यस और नो? तो इन द सेम वे, मैनेजर जो होता है, वो लोग भी उन्हें खुद ए टू जेड हेल्प नहीं करेंगे, सिर्फ एक राइट, हम बोलते हैं ना, मार्गदर्शन, राइट, शोइंग देम द राइट पाथ, राइट, दैट्स नोन एज डायरेक्टिंग. द नेक्स्ट वन, सी, कंट्रोलिंग. ओके, सो नाउ इसमें भी लेट मी आस्क यू पीपल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज आपको, ओके, लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन. व्हाई डू यू थिंक एग्जाम हॉल्स में सुपरवाइजर्स होते हैं? What is the reason basically? Can you tell me? Simple question I am asking. Why are there supervisors in exam hall?
यस, कंट्रोल करने, ताकि स्टूडेंट्स डोंट कॉपी एंड डिसिप्लिन इज मेंटेन थ्रू आउट द क्लास, right? So in the same way, for example, you people tell me if I am a manager. See, after all, आप भी future में job करोगे. Why do employees work for you? I was talking about event management firm. Why are people working for you? Obviously because you are paying them a salary, right? So now my next question to you is, what do you think कि आई एम माई एटीट्यूड इज लाइक दैट कि चलो सब एम्प्लॉयज खुद से अपना काम कर देंगे, मैं सिर्फ बैठा रहता हूँ एंड फोन पे आई डू टाइम पास. टेल मी, डू थिंग्स वर्क लाइक दैट इन रियल लाइफ? ऐसे काम होता है क्या? No, it never happens like that, right? See, try to understand, when we are paying someone a salary, I mean any company, any organization, managers जो होते हैं, they have a certain set of expectations from the people, right? See, and in the same way, controlling means what? See, if someone mistakes हो भी रहे हैं, तो उन्हें correct करना, that is our responsibility of a manager. Controlling means, see, I'll tell you, इसमें आगे जाके you will study a concept, theory X, theory Y. क्या होता है? We might say, a good manager, he should be someone like who's a friend also, and at the same time he is a boss also. Try to understand. See, if we try to become too friendly, then also employees won't take you seriously, नहीं सुनेंगे तुम्हें, right? But at the same time, अगर आपका एकदम boss like attitude रहा, तो everyone would be scared of you. People will, they won't tell you all the problems genuinely, right? So in the same way, who's a good manager? Who knows how to control things, right? Yes. Now POST C हो गया. Now the next one is O. Okay. So now let me tell you people, ये जो O है, पहले already एक O हो गया है, organizing. So let me tell you all, this O is nothing but organizing. Now try to understand. Now people will ask me, मैम ऐसा क्यों है, ओ क्यों अगेन ऑर्गेनाइजिंग ओ रिपीट हुआ है? इसका लॉजिक एकदम सिंपल है. आपको ये कोड वर्ड याद रहे, पोस्ट कॉर्प, POST CORP, इसीलिए ये ओ अगेन याद रहे, अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है. ओके, तो जिस ओ आप एग्जाम में यू विल राइट इट ओनली वंस, एग्जाम या असाइनमेंट ओ, राइट? नो नीड टू राइट ऑर्गेनाइजिंग अगेन एंड अगेन. ठीक है? So POSTCOR. Now R, I am typing it out in the chat box, stands for reporting. Okay, now try to understand the meaning of reporting. ठीक है. Um, Giving you a simple example. For example, you guys know, even you all are reporting to me. कैसे मुझे रिपोर्ट कर रहे हो? हम ये जो होम असाइनमेंट्स आपसे कलेक्ट करते हैं एवरी वीक एंड ऑल, सो दैट वी कम टू नो कौन स्टूडेंट क्या काम कर रहा है बेसिकली, राइट? सो इन द सेम वे, वन मोर, ओके, लेट मी गिव यू एग्जांपल. वी वर टॉकिंग अबाउट एन इवेंट मैनेजमेंट फर्म. तो उसमें रिपोर्टिंग क्या हो गया? मतलब फॉर एग्जांपल, अगर कोई डेकोरेटर है, हम डेकोरेशन का देख रहे हैं, तो एवरीडे क्या कर रहा है, वो मटेरियल्स ला रहा है कि नहीं, या आके सिर्फ टाइम पास कर रहा है? मे बी समवन हु इज एन एंकर, इज ही प्रैक्टिसिंग हाउ टू स्पीक? स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है, राइट? क्या वो बना रहा है कि नहीं? ऑल ऑफ दैट, right? So what I mean to say is, reporting every day what you are doing, you have to tell it to your boss, manager, जो भी है. So yeah, you might have known, I don't know how many of you are doing internships or have worked. Companies में mostly what happens at the end of the day, every day you have to make reports कि आपने क्या क्या किया आज के दिन. Why they are doing this is, see, try to understand future में. For example, if I come to realize, I, as continuing with the example of event management firm, वहाँ पे कुछ डेकोरेशन में समथिंग और दी अदर वेंट रॉन्ग, राइट? नहीं मटेरियल्स ठीक थे, तो क्या हुआ? अगर मैं एवरी डे इफ आई एम नॉट टेकिंग अ रिपोर्ट व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, व्हाट विल हैपन इज, अल्टीमेटली नाम तो मेरा ही आएगा बिकॉज बॉस मैं हूँ, राइट? तो रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज इफ समथिंग और द अदर गोज रॉन्ग, यू कैन डायरेक्टली ब्लेम द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल. कंपनीज में भी अगर आप देखो,
ऑलवेज एवरी डे एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन इज सपोज टू मेक अ रिपोर्ट, फिर बॉस को ईमेल करना पड़ता है, राइट? फिर वो जो होते हैं उनके बॉस को रिपोर्ट मेल करते हैं कि उन्होंने एम्प्लॉय से क्या क्या करवा के लिया, राइट? बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन ऑल ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज टाइम, राइट? सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ. अभी जो लास्ट बजटिंग है ओनली दैट इज लेफ्ट आउट. सो टिल नाउ एनीवन हैज एनी डाउट्स, please feel free to ask it in the chat box. Like, since with this class I'm interacting for the first time, I don't know all of you, so just tell me, are you comfortable enough with my lectures? Anything more you want to know? Anyone wants to change my teaching style, कुछ और examples चाहिए या anything like that? Okay, so now we'll start with the last function of management. B stands for budgeting. Okay. Now see, everyone over here in this class knows there is always a limitation of resources. Like, see, resources ke type. So for example, biggest human resource. Thank you so much for your comments. Yeah, someone is asking me, R stands for reporting. REPORTING. Thank you for your kind comments. R stands for reporting. Yes, and B stands for budgeting. Okay, now the last one B we are continuing. See, because anyway Zoom has a limitation. So I mean exactly at 11:10 lecture end हो जाएगा. So yes, तो उसके पहले I am finishing this up. क्या? Yes, O stands for organizing. दोनों O एक ही है. वो कोड वर्ड आपको याद रहे इसलिए पोस्ट कॉर्प करके है. दोनों O एक ही है. It stands for organizing only. I'll just repeat once again. Planning, organizing. See, वो slide में it's already written the 5 functions. Planning, organizing, staffing, directing, controlling. O is the same organizing. No need to write it again. R stands for reporting. REPORTING. मैंने chat box में भी लिखा था reporting. B stands for budgeting. Okay, now try to understand the meaning of budgeting. See, budget means what ultimately? See, every many types of resources are there. Manpower hai, money hai, machines hai. But now you people tell me, डू यू थिंक कि ऑलवेज सी वी लिव इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, बहुत कंपटीशन है, तो तुम्हें क्या लग रहा है पैसा आसानी से मिल जाता है? नो, इट्स नॉट एन इजी थिंग. कई बार हमें कम पैसे में काम करवाना पड़ता है. सो फॉर एग्जाम्पल आई वॉज टॉकिंग अबाउट इवेंट मैनेजमेंट फर्म, तो वहाँ पे डेकोरेटर्स से कम. द कंसेप्ट यू माइट हैव स्टडी कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब क्या? मैक्सिमम ऑफ मनी हम जितना ज्यादा करेंगे उतना विल डिमांड देम टू गिव मोर डिस्काउंट्स, समथिंग लाइक दैट, राइट? सो क्या होता है, एंड अल्टीमेटली सी वी आर नॉट हियर टू कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वी आर हियर टू मेक प्रॉफिट, राइट? सो आफ्टर ये सब खर्चे निकालने के बाद कटिंग ऑल द कॉस्ट, व्हाट रिमेन्स विथ अस इज नोन एज प्रॉफिट. आफ्टर ऑल एम्प्लॉयज है दे आर नॉट गोइंग टू वर्क फॉर फ्री, राइट? सो उनकी जो सैलरीज है, अदर कॉस्ट है, एक्सक्लूडिंग दैट व्हाट saves, what you are saving up is known as budgeting. What I mean to say is, see, try to understand, इसका ये भी meaning है. Now if someone says कि चलो, if there is one client who has given me a lot of money, तो मैं उसको I'll work out for some cheaper options. So see, things don't work like that. ये this concept is about marketing now. There's one saying उसमें it's known as customer is known as the king. King मतलब राजा. Now see, try to understand what's the meaning of this. You people tell me, in today's time competition की कोई कमी नहीं है. So for example, if customer finds out कि ये event management company है, उनकी services I didn't like it so much, so next time what he'll do is, तुम्हारे तो of course he won't come back to you, but there's something known as word of mouth publicity.
word of mouth means what? People keep on telling each other. कल फॉर एग्जाम्पल तुम कस्टमर हो, तुम क्लास में 10 लोगों को बताओगे, those 10 people will tell it to more 100 people, right? So what I mean to say is these are the things that also matter in today's time. So budgeting means what? सी रिसोर्सेस की तो कमी होती है, आई मीन टू टेल यू, राइट? तो उसमें से कैसे काम करवाना, दैट ऑल्सो द बेस्ट एग्जाम्पल दैट आई कैन गिव यू ऑफ अ बेस्ट बजट, और ये सबके घर पे होता है. Take the best example of your mother. I always keep on telling this example. Why? So see, normally I'm talking about those times. आपकी जो moms है, I'm assuming in most of your homes, your father, he is the sole earning member of your family. Since you all are young, yeah, you all must be studying. So what I mean to say is, कम बजट में इतने जो 3 4 में बी योर ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो माइट बी लिविंग विथ यू, आपके दादा दादी. सो उनका सब खर्चा निकाल के पूरा घर कैसे मैनेज करना, योर मदर इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट, राइट? सो आई मीन सी, ऐसे मैनेजमेंट के एग्जाम्पल्स यू कैन वेरी मच फाइंड इट इन योर डेली लाइफ ऑल्सो. दीज ऑल आर प्रैक्टिकल concepts. This no textbook will ever teach you, right? Yes. So that is what I wanted to explain you. So I hope now we are actually done with this answer, functions of management. So I am repeating again, the questions for your assignment are: what do you mean by management? What are the functions of management? And see, don't worry about the notes and all. So see, currently I must have told कि prints, publishing houses are not working, so books भी नहीं print हुए, हमारे पास भी नहीं आए. So what you can do is, अभी के लिए मैं आपको जो notes दे रही हूँ, you can refer them, right? After once college starts, I'll tell you which textbook to refer and all. So on your WhatsApp group, once the lecture is over, I will send you all these slides. Like ये today what I taught you from my textbook camera है, मैं उससे photo ले लूँगी. I'll send it to you. Apart from that, anyone has any doubt? ओके, आई माइट नॉट हैव मेल्ड इट, रादर आई थिंक मैंने ग्रुप पे डाला होगा. अच्छा, समवन इज सेइंग दे हैव ऑलरेडी सेंट द असाइनमेंट टू मी. ओके, दैट्स ग्रेट. बट आई वुड स्टिल से ऑन संडे फिर से तीनों मुझे मेल कर देना, ताकि इट डजंट क्रिएट एनी मोर कंफ्यूजन. व्हाट हैपेंस इज आई एम हैंडलिंग मेनी डिविजन्स, so it becomes difficult for me also to keep a track कौन दे रहा है कि नहीं. So all I don't know, week में जितने 2 3 lectures happen, सबका एक साथ मुझे send कर देना. Every Sunday to Sunday this can be done. Okay. And yeah, one more thing. See, uh, I am sending you the link of my YouTube channel. So everyone, please make sure, because I have seen every day I keep on uploading the lectures, but